Only, as we have 8 pools, only 1 or 2 teams will be better out of all. So we can have a handful of teams which are good. So I think they will only shine. But then the teams like Pondicherry are coming from the northeast and all. I think they need to do a lot more effort than the other teams. बिल्कुल राधिका, कल त्रिपुरा और मणिपुर ने भी अपने अपने मुकाबले हारे जरूर थे, बट दे रियली गिव अ टफ फाइट एंड ये बात कही। और जो महाराष्ट्र और गुजरात का कल का मुकाबला था उसमें गुजरात भले ही हार गई, बट उन्होंने काफी अच्छा तगड़ा रिस्पांस दिया था। सो इट्स गुड टू सी। बट राइट नाउ विद जस्ट 4 प्लेयर्स, पॉन्डिचेरी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर और यहाँ पर विघ्नेश बाबू आए हैं रेडी के लिए। Yeah, Vignesh Babu, and again look at that. His footwork is far away from the back line and the bonus line. So, and a block that went wrong, but the coordination between the defense of Rajasthan is phenomenal. बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर फिर एक बार राइट कवर ने जो ब्लॉक किया था आधे अधूरे मन से और लगभग इस पे एस्केप कर गए थे विघ्नेश, लेकिन वहां पर सपोर्ट काफी अच्छा था, इसलिए पॉइंट मिल गया। और अब जय भगवान फिर एक बार आ गए हैं। जय भगवान बहुत ही एक शातिर ऐसे रेडर है और यहाँ पर सुपर टैकल का एक चांस बन सकता है, लेकिन नहीं, बहुत जल्दी राइट कॉर्नर में अटेम्प्ट किया टैकल का। बहुत एक थोड़ा सा मतलब कहते ना ओवर एंथुसियास्टिक टैकल था ये। Absolutely, that too on Jay Bhagwan, who has the speed, has his weapon. You cannot tackle him because he was teasing the defenders to come over to him so that he knows the escape route. बिल्कुल, तो 6 अंकों की बढ़त फिलहाल है राजस्थान के पास और पौंडीचेरी के लिए अनिवार्य होगा कि वो जल्द से जल्द या तो कोई सुपर 8 करे, बोनस पॉइंट्स ले और ये जो डिफरेंस है इसको कम करें। यहाँ पर बोनस ले लिया है, हमारी बात सुन ली सागर ने, तो यहाँ पर अब ऑल आउट का मौका हो सकता है। जय भगवान महिपाल आए हैं और बहुत जल्दी राधिका, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी क्लोज। Absolutely, and after this one all out, a brilliant kick executed, and I think he crossed the end line with that kick, so it would be an all out points for Rajasthan here. 2 touch points and 2 for the all out, so 4 extra points added. मतलब देखिए, पहले 5-7 मिनट में ही यहाँ पर ऑल आउट हो गया, बहुत ही जबरदस्त। और इस तरीके से राजस्थान ने जो अपना एक दबदबा कायम किया था पहले कुछ मिनटों में, इट स्टिल कंटिन्यूज एंड पौंडीचेरी विल हैव अ वेरी टफ टाइम टुडे। और यहाँ पर देखिए 8 मिनट, पहले 8 मिनटों में ही ऑल आउट करवा दिया है और विश्व मोहन आए हैं अब रेड करने के लिए। Yeah, the Raiders haven't yet challenged the defense of Rajasthan unless they went wrong. Nobody went directly and attacked the defense of Rajasthan. बिल्कुल, तो यहाँ पर कोशिश हो रही है लगातार पौंडीचेरी के द्वारा कि कोई ना कोई एक कहते ना एक दरार पैदा की जाए राजस्थान के डिफेंस में, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। अब ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज होगी यहाँ पर पौंडीचेरी के लिए एज अ यंग टीम, किस तरीके से ब्रिजेंद्र चौधरी हैं, इनको क्या फंसाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राधिका एक चमत्कार दिखाना होगा पौंडीचेरी को, तब जाकर बात बनेगी। Especially, if the Raiders do not perform, then it would be tough for Pondicherry to even, thinking of a comeback. 4-13, of course, just a 9-point deficit that Pondicherry is in. But then momentum and, of course, the confidence levels of Rajasthan is good. But then this was overconfidence from the left corner. क्वाइट अ बिट, आपने बिल्कुल सही कहा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ही मतलब देखिए आपके पास एक बढ़त बन गई है तो आप कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेसेंट बन जाते कि अब तो शिकार हाथ में फंस ही जाएगा, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। राहुल चौधरी आए हैं यहाँ पर, 13-5 ऐसी बढ़त बना ली है राजस्थान ने। अब ऑल आउट होने के बाद पौंडीचेरी थोड़ा सा यहाँ पर ये बड़ी रेड हो सकती है, गलत बहुत एडवांस टैकल कर दिया। Absolutely, multi-pointer for Rajasthan. The moment one of the players goes out, the next minute the player is being revived. It was a right angle as well, but then when you go for the chain tackle, come as a team. करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को मिलकर आपकी उस चेन में उनको शिकार को पकड़ना पड़ता है, वरना कहीं पर भी थोड़ा सा तालमेल बिगड़ गया तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर शायद बोनस है और पॉइंट भी टू टच हो चुका है। जी बिल्कुल, तो पौंडीचेरी धीरे धीरे करते हुए वापसी कर रहे हैं, बट वो एक जो दमखम दिखाना चाहिए ना राधिका, वो अब तक दिखा नहीं है पौंडीचेरी की टीम के द्वारा। Absolutely brilliant toe touch this was from the left Raider, and in a defense of 6 the Raiders were self out, playing at the edge of the lobbies. थोड़ा बैलेंस वहां पर गड़बड़ा गया
महिपाल थे शायद वहां पर, और एक कहते हैं ना कि तोहफा मिल गया पांडिचेरी को. बट राइट नाउ द डिफरेंस इज स्टिल क्वाइट हाई. पांडिचेरी को जल्द से जल्द बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं इस स्कोर को पास लाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बात बन सकती है. Absolutely. They need to do those quick raids. They cannot kill the 30-second raid. Defense of 5 running hand touch, very, very slow on the turn, did not help the raider, though he was tall. Yes, Ajay Bhagwan. Total raids 319, touch points 188, bonus 48, raid strike rate 74, 236 are the raid points in total for this player. We're talking about this stats for this player who was a champ for Yuva Kabaddi. Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन यहाँ पर उनको धकेल दिया गया है बाहर एक कंबाइंड एफर्ट के द्वारा. थोड़ा सा एक अटपटा अंदाज था, अकेले ही निकल गए थे वहां पर पांडिचेरी के राइट कवर, उसके बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, बट लकी वहां पर पांडिचेरी को पॉइंट मिलता हुआ. विघ्नेश बाबू आए हैं, 4 का डिफेंस है, यहाँ पर मौका हो सकता है पांडिचेरी के लिए राजस्थान को थोड़ा सा फंसाने का. और आप जो कह रही है राधिका, क्विक रेंज, और यहाँ पर फंसा दिया जी बिल्कुल. कमर पर जो एक पकड़ बनाई, उसके बाद रेडर कहीं पर भी जा नहीं पाए. Absolutely. 4 members defense, corner to corner attack. The right corner came in with a frontal block that missed, but then the rest of the second layer of defense supported. थोड़ा सा और अगर चपलता दिखाते तो शायद एस्केप कर जाते रेडर. Yeah, they're talking about this captain of Pondicherry, Gautam Murugan. We are very, very familiar with this defender, the right cover defender, good with the dashes from the covers. Tackle attempts are 538 and tackle points are 254 for him in the Yuva Kabaddi series. Brilliant. और मुर्गन की जो बात कर रहे थे, मुझे याद है कुछ उनके जो टैकल से युवा कबड्डी में थे वो रियली फिनोमिनल. बट यहाँ पर अब 8 पॉइंट के लीड के साथ राजस्थान आगे है. यहाँ पर रेड पर है सागर सुजीत, बट कुछ बात बनेगी नहीं. वो जो आप कह रही थी ना, वो पॉइंट बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि जो फटाफट रेड मारने का पैतरा वो नहीं अपना रहे हैं पांडिचेरी. Absolutely. Too much of footwork that will only get the defender to the rhythm. So that's what it is. Minimum effort and maximum attack should be the skill, and this is what we have seen from this raider of Rajasthan. The moment he entered, he accelerates, gets a hand touch, gets back. बिल्कुल. पांडिचेरी के यहाँ पर शिवा कुमार को उन्होंने आउट किया, तो यहाँ पर विश्व मोहन अब आ चुके हैं रेड के लिए. कमाल राजस्थान ने पहले मिनट से ही दिखाना शुरू कर दिया था. क्या अब ये फर्स्ट हाफ खत्म होते होते पांडिचेरी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पीछे पड़ जाएंगे? इसी बीच एक रनिंग हैंड टच लगाया है बहुत अच्छी तरीके से वहां पर, और एक और पॉइंट मिल गया पांडिचेरी को. Absolutely. Look at that. He shuffled, he pushed the defense once. I think showing up the back from the defender was a mistake. And will he come in? No, it should be a super raid. यहाँ पर हम बात कर रहे थे पहले वाले रेड की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई पांडिचेरी की तरफ से. डाइव अच्छी थी, एंकल होल्ड था, सपोर्ट भी था, लेकिन वो रेडर के हाथ को नहीं रोक पाए. कितने पॉइंट? Gautam, and four members are in question. 3 of them walked out, and it's a 4-point raid. What a super raid for Rajasthan. Let's see what happened in that raid if we get to see the replay. Now, thigh hold was good, but the corners came in late. This is what we see. When the support comes in, they try to push the defender on the mat rather than doing the follow-through action. That's where the raider escaped. करेक्ट. और जो समेटना चाहिए था पूरे रेडर को, ये दिक्कत हो गई. यहाँ पर जय भगवान आ चुके हैं तेजी के साथ और पॉइंट निकाल के चले गए. पलक झपकते ही ये पहले हाफ में दूसरा ऑल आउट हो सकता है यहाँ पर पांडिचेरी का. Absolutely easy hand touch point for Jay Bhagwan there, and the last player remains. पूरी तरीके से रॉन्ग दिया है अब तक राजस्थान ने. और वो जो सुपर हिट हुई थी जिसकी आप बात करते हैं, और यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है. मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि पांडिचेरी के इस युवा खिलाड़ी ने, सुजीत ने, वहां पर एक बहुत बड़ी एक सुपर हिट मार दी थी, लेकिन बस कुछ ही मिलीमीटर सेंटर लाइन से मिड लाइन से खींच लिया उनको राधिका अंदर. Absolutely. Look at the coordination. They have one defense fails, the second layer comes and attacks.
So that is the proper understanding of a practice. And this is Mahipal yet again. And Gautam, if you look at him, he's on the right cover position. जी राधिका, पांडिचेरी के लिए चमत्कार हो जाता अगर वो सुपर हिट हो जाती तो. Exactly. At least they would have, not been all out that quickly. And we need to understand one thing. That in the nationals, what happens is there would be a selection committee that would be gauging every single match, and they would love to take the best of the players from each team, for the Indian camp and all. So I think that's so important for them to display their skill set here. And we have Ranveer Singh Sherawat, Ashok Shinde and Manpreet Singh as three eminent panel members for the selection committee. और इन तीनों को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होगा. तीनों एक से एक दिग्गज है. मनप्रीत ऑफ कोर्स ट्रिपल टाइटल होल्डर प्रोफेशनल कबड्डी के, खुद भी एक जबरदस्त कोच रहे हैं. कमाल. और इन युवा खिलाड़ियों के पास एक शानदार मौका है और पांडिचेरी के खिलाड़ी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो बात बन नहीं रही है उनकी. 4 मिनट अभी भी बाकी है पहले हाफ में और यहाँ पर विश्व मोहन लगातार यहाँ से वहां कुछ मौका नहीं. खींच लिया, एंकल होल्ड, भरपूर सपोर्ट. मतलब कहते ना डिफेंस की अपने आगोश में उनको बिल्कुल ले लिया. Absolutely. I think this is the purely combination of the team that is working out for Rajasthan, Pankaj. बिल्कुल. और ये सही बात कही आपने. थोड़ा सा मतलब और उनका एक थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज भी राजस्थान लुक्स क्वाइट सुपीरियर. जिस तरीके से जय भगवान है, महिपाल है या राहुल चौधरी है और उनके जो पैतरे हैं ये भी बहुत ही शानदार है. काफी मतलब प्रिसाइज एंकल होल्ड हो या फिर आपका जो होल्ड हो, रियली वेरी गुड. Yeah, some technical error. The screen got freezed. But everybody who is watching on fan code, this is the 70th Senior National Kabaddi Championship. 30 teams are participating. You have the best of the Kabaddi talent here in Ahmednagar for the next 3 days. So that is definitely a Kabaddi festival happening there. बिल्कुल त्योहार सा माहौल है अहमदनगर में. गर्मी की चिंता करे बिना सारे खिलाड़ी जो है झोंक रहे हैं अपने आप को. एंड यू मेंशन्ड अबाउट द टीम्स राधिका, 8 ग्रुप्स और हर एक ग्रुप से 2-2 टीमें आगे जाएंगी. दैट इज हाउ थिंग्स आर देयर. Yes, the winners and then the top 1 and 2 teams from each pool will move forward, and the rest of the teams they need to just work out. I think that's how it is. Yeah, of course it is a summer season. That's the reason we have evening matches scheduled. So just not to exhaust the players because it is played outdoors, unlike the indoors. Because number of matches played here are maximum in just 4 days. So that's the reason. Correct. Keeping in mind we have a vast stadium with 4 to 6 matches, and simultaneously lot of teams are playing across. And also for the selection committee, it gets so difficult to shuffle around different teams. I can imagine. I mean, Radhika, if you and me were sitting there, we would have been running around to get a look on each and every player. But कल राजस्थान ने झारखंड को 55-11 से हरा दिया था. बहुत ही लाजवाब उनका एक शुरुआत हुई थी. But the fact remains that कई सारी टीमें हैं जिन्होंने बहुत बड़े स्कोर्स दर्ज किए हैं. हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने कल 68 पॉइंट्स निकाले एक ही मैच में. सर्विसेज ने 57 निकाले. तो हाई स्कोरिंग मैचेस भी कल हमको देखने को मिले. Absolutely. We can say about 7 to 8 teams